So, I welcome you all again for lecture number 35. And here we go with a kind of unexpected distinguish. थोड़ा सा लेक्चर शुरू करने में लेट हुआ as earlier two mics were not working. So finally show has to go on. I took this hand mic and we are carrying on the show ahead. Distinction. Write down the question. Distinction between succession. Distinction between succession and assignment. And assignment as a प्राइमरी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताना चाहूंगा सक्सेशन ये ऑटोमेटिक होता है और असाइनमेंट ये डेलिबरेटली आपको करना पड़ता है. असाइनमेंट जैसे कि आई हैव ड्रॉन द बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन यू, यू आर माई डेटर एंड आई एंडोर्स दैट बिल टू माई creditor. This is assignment, right? ये deliberately किया गया है endorsement of a bill of exchange. लेकिन भाई साहब succession ये automatically होता है. एग्जाम्पल के तौर पे ए नाम का बहुत बड़ा बिजनेसमैन अचानक कार्डियक अरेस्ट से उनका देहांत हो जाता है तो उनकी जो एसेट्स है और उसके साथ उनकी जो लाइबिलिटीज है ये ऑटोमेटिकली इनके बीवी बच्चों को ट्रांसफर होगी. सो राइट्स भी ट्रांसफर होंगे, अधिकार भी ट्रांसफर होंगे और ड्यूटीज भी ट्रांसफर होंगी. आई होप इस बेसिक 2 मिनट के डिस्कशन का इस आंसर में आपको बहुत उपयोग होगा. 3 मार्क का ये क्वेश्चन है एंड हियर इज द आंसर. डिस्टिंक्शन बिटवीन टू लीगल कॉन्सेप्ट्स, between two legal concepts, namely succession and assignment, namely succession and assignment may be noted carefully, may be noted carefully, full stop. When the benefits of a contract, when the benefits of a contract are succeeded to by process of law, automatically by the process of law, comma, then both burden and benefits, then both burden and benefits attaching to the contract, comma, may sometimes devolve, 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 get transferred on the legal heir, कायदेशीर वारस, full stop. Suppose a son succeeds to the estate of his father
to the estate of his father after his death. After his death, कॉमा एक 5-5.5 साल पहले की घटना मुझे याद आई। कैफे कॉफी डे ये जो ब्रांड है, जिनके मल्टीपल आउटलेट्स ऑल ओवर इंडिया में थे, जब इस बंदे की लाइबिलिटी 5,000 करोड़ के आसपास पहुंची, साउथ इंडियन बंदा था, ही कमिटेड ए सुइसाइड। तो बच्चे तो छोटे थे, उनकी बीवी ने अंडर सक्सेशन सीसीडी का कारोबार संभाला, और उस लेडी को मेरा सैल्यूट है। शी हैज ऑलमोस्ट रिपेड टिल टुडे all the liabilities which came to her from her husband succession, comma, he will be liable to pay the debts. I was talking about the same instance. He will be liable to pay the debts and liabilities of his father owed, OWED, owed during his lifetime, full stop. But if the debts owed by his father, suppose 10 crores, exceeds the value of the estate, inherited by the son, then बच्चे की लाइबिलिटी, लड़के की लाइबिलिटी जितनी एसेट्स मिली है उतनी ही होगी, बराबर है। देन ही वुड नॉट बी कॉल्ड अपॉन टू पे द एक्सेस, फुल स्टॉप। In other words, comma, the liability of the son will be limited to the extent, maryada, to the extent of the property inherited by him. On the new line, in the matter of assignment, comma, however, the benefit of a contract can only be assigned, but not the liabilities thereunder, full stop. This is because when liability is assigned, comma, a third party
gets involved therein. Third party gets involved therein, full stop. Thus, a debtor, a debtor cannot relieve himself of his liability, to a creditor by assigning to someone else his obligation to repay the debt. His obligation to repay the debt. Full stop. Paragraph. On the other hand, if a creditor assigns the benefit of a promise, comma, he thereby entitles endorsement of a bill of exchange. He thereby entitles the assignee to realize the debt from the debtor, but where the benefit is coupled with a liability, benefits के साथ liability भी आती है, benefits is coupled with a liability, or when a personal consideration, पर्सनल स्किल का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, पर्सनल कॉन्फिडेंस का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, पर्सनल कंसिडरेशन हैज एंटर्ड इनटू द मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, then the benefit cannot be assigned. In simple language, चाहे वो सक्सेशन हो, चाहे वो असाइनमेंट हो, पर्सनल स्किल के कॉन्ट्रैक्ट में दोनों संभव नहीं है, राइट? सो इसके बाद जितना भी समय है थोड़े केस स्टडीज का पीछा करते हैं, केस स्टडी सेक्शन में चले जाते हैं. एंड हियर इज द केस स्टडी रिगार्डिंग ए माइनर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का केस स्टडी है. केस स्टडी हम लिखते नहीं, हम आंसर जरूर लिखेंगे. कुछ मेरी कमेंट्स भी होंगी जहां जरूरी होगी. ईशान, एजेड 16 years, was studying in an engineering college. On 1st March 18, he took a loan of rupees 2 lakhs from Vishal for the payment of his college fees and agreed to pay by 30th May 2019. लगभग 1 साल 2 महीने बाद ईशान possesses assets worth rupees 15 lakhs. On due date, Ishan fails to pay back the loan to Vishal.
Vishal now wants to recover the loan from Ishan out of his assets, decides whether Vishal would succeed, referring to the provisions of the Indian Contract Act 1872. मेरी प्रिलिमिनरी कमेंट होगी, an agreement with a minor is void ab initio. A minor cannot be a promisor, but he can be a promisee or a beneficiary. But remember the next dialogue, if anyone supplies a minor necessary goods or necessary services, then minor agreed he is not personally liable, but it is his estate which is liable. अगर लोन दिया था कॉलेज फी भरने के लिए, तो लॉ आगे जाके एक बात कहता है, लोन देने वाले ने ये लोन नहीं दिया है, खुद ने ही ये नेसेसरी सर्विसेज जिसके द्वारा माइनर का करियर तैयार होने वाला है, उसने खुद ने पैसे नहीं दिए, उसने खुद ने ये सर्विसेज ही दिए हैं, ऐसा एजम्पशन होता है. एंड देन माइनर द प्राइवेट एस्टेट इज लायबल अंडर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट. ये इंपॉर्टेंट है, अंडर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट. सो हियर इज योर आंसर. इस केस स्टडी के बाद आज हम रुकेंगे. आज चौथा लेक्चर ये लाइन से मेरा चल रहा है. सो आंसर according to section 11 of the Indian Contract Act 1872 of the Indian Contract Act 1872, comma, every person is competent to contract, who is of the age of majority, according to the law, Indian Majority Act, according to the law to which he is subject, according to the law to which he is subject, and who is of sound mind, and is not disqualified, from contracting by any law to which he is subject, by any law to which he is subject, and who is of sound mind, and is not disqualified, from contracting by any law to which he is subject,
paragraph. A person who has not completed the age of 18 years is a major. Who has completed the age of 18 years is a major, and otherwise ऐसा अगर नहीं है, otherwise he will be treated as a minor. He will be treated as a minor. Full stop. Does, comma, Ishan, who is a minor, is incompetent to contract, and any agreement with him is void. रेफरेंस के लिए लीजेंडरी केस लॉ मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष 1903। हम हमारे आंसर का बेस तैयार कर रहे हैं। अभी लास्ट पैराग्राफ में हम हमारे आंसर के फाइनल पड़ाव तक पहुंच जाएंगे। पैराग्राफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन हम लिख रहे हैं। सेक्शन 68 of the Indian Contract Act 1872 of the Indian Contract Act, 1872, however, prescribes the liability of a minor, for the supply of the things, which are the necessaries of life for him, to him. Full stop. It says that though minor is not personally liable, मैंने बेसिक कमेंट्री इसी विषय में की थी, इज नॉट पर्सनली लायबल टू पे द प्राइस ऑफ नेसेसरीज, supplied to him or money lent as a loan. Money is given for those necessary goods and services, or money lent for the purpose, comma, the supplier or lender will be entitled to claim the money oblique
price of goods oblique price of goods or services, price of goods or services which are necessaries, suited to its condition of life, legal word station in life, suitable to its condition of life, provided that the minor has a property. Provided that the minor has a property. Full stop. The liability of a minor, is only to the extent of minor's property. उससे ज्यादा उसे कुछ भी देने की जरूरत नहीं है. Minor's property. Full stop. Thus, according to the above provision, comma, Vishal will be entitled to recover the amount of loan, given to Ishan for payment of the college fees, from the property of the minor, So here we completed an unexpected distinguished succession and assignment. और आज हमने माइनर का नेसेसरी सर्विसेज के लिए जब लोन दिया गया है एक क्लासिक केस कवर किया. सो ऐसे ही हमारा लेक्चर का जर्नी कल से आगे चलेगा. आज हम 35 तक आए हैं. यू विल ऑल्सो एक्सेप्ट बहुत कम समय में आए हैं. सो जो भी हमारे दोस्त ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, अरे एक तो फीडबैक दीजिए व्हाट्सएप पे. मुझे भी जरा मैसेज मिलेगा. इतना वन वे काम कर रहा हूं, मुझे भी थोड़ा काम का सेटिस्फेक्शन मिलेगा. इफ यू आर अ ह्यूमन बीइंग, कंसीडर द साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट ऑफ अनदर ह्यूमन बीइंग. थैंक यू वेरी मच. लेकिन अपेक्षा नहीं है, कंपल्शन नहीं है. मैं हमेशा प्यार से बात करता हूं. लोगों को मैं बहुत स्ट्रिक्ट लगता हूं. मेरा प्रॉब्लम यह है, if I am so strict with myself, naturally the behavior pattern is going to be, I am going to be strict with others also. Please understand. और आज के लिए thank you very much.